I request all the participants to keep their mics off. Welcome you all again in the very first workshop of this session that we are from World Peace School Alandi is trying to organize, and again we want you all to be the part of our school to make to work on the growth of our students as parents and teachers. As our principal sir, our respected principal sir used to say that a child's growth is only be possible when a parent and a teacher will do the work in collaboration. So keeping that in mind, World Peace School Alandi is starting again a series of workshops. And this is the very first workshop of our the series of the workshops, WPS workshops 2023-24. And what will be the best point to discuss about for parenting? Like, parenting is the very important thing, though we all are trying to be master in parenting, but somewhere we need a guidance. Somewhere we are also confused what to do and what not to do as a parent. So here our counselor ma'am, Ms. Dipali Rawat is here with all of us, and she is here to share her thoughts about and some strategies that we need to follow, and that will definitely help us to improve our parenting for our children's growth and their development. Over to you, Dipali ma'am. Yes, thank you so much, Shikha ma'am. So I guess we can start now, right? Yes, yes. Yes. Okay. Just let me share my screen. So yes, good morning, all of you, all the parents and teachers who are who have joined this workshop today. So I really appreciate your time and efforts that on the Sunday morning you have joined this workshop, and you are taking the efforts to learn something about parenting for your children, and it is really appreciating thing, and I show my gratitude towards it. So talking about parenting, so parenting is not something which is one time process that अभी आज हम लोगों ने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है और हम लोग आज सब सीखने वाले हैं और कल से हम लोग सब अच्छे से कर लेंगे, ऐसे तो कभी होने वाला नहीं है. So for that we need to learn and have patience and try, fail. So this process will be going on throughout the life as a parent. So because what happens is, like, throughout this process we, even as a human, we get the chance to develop ourselves as a parent. So that's why this parenting is so much important. And today, like, on which topic we are going to talk about, like, better parenting is something, it is a vast topic. So it can conclude many aspects of parenting. So today we are going to focus on understanding child emotionally. So that's why this topic is been given, that better parenting, understanding child emotionally. So what we are going to learn in this workshop today is, as I told you, that if we, we are going to talk and learn about the children on emotional level more, because what happens is, we are living in this society, so we are living in this Indian culture, and our culture is more based on, our culture values more relationship than achievement. So it is a relationship driven culture. So that's why considering others emotion, like understanding own emotions and even others, it is most important thing. And as a parent, this is something that we should learn more, and we should work
on it to get to understand our child on emotional level as well. That's why I thought that we can talk about this today, and maybe later in other workshop we can cover up the other aspects of better parenting as well. So we'll begin with the session now, ma'am. uh, like when we are talking, uh, just a second, something has happened. Yes. So when we are talking about the emotions, how to understand the child emotionally, we need to first understand the what is emotional development is. So that's why I'll just brief you about the emotional development, what it means, and what are the things which we need to consider when we are understanding the emotional development of the child. uh, I guess there is some technical issue. Just give me a minute. Um, I guess the Pali ma'am is having some technical issues. She is working on it. During that time, I would like to hear from all of you. Like, if someone want to share something about like what is your opinion about parenting, or any issues that you are facing with your child, or anything you want to share with us based on this topic. Dipali ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes, please. Yes, Yeah, Swati ma'am. yes. Actually, what happened? Our child's single. I have a single girl child. Okay, okay. मैं मेन इशू मैं ऐसा फेस करती हूँ कि वो शेयरिंग नहीं करना चाहती, शेयरिंग में दिक्कत आती है, इमोशनली वो बहुत डाउन होती है। अगर किसी फ्रेंड्स के साथ अगर झगड़ा होता है तो शी कांट बेयर। ओके, हाँ, तो उसके लिए कुछ है क्या, मतलब क्या? श्योर मैम। यस, मतलब एक दोस्त से झगड़ा हुआ तो वो रोते रोते आएगी कि उसने ऐसा किया ऐसा किया। वो मतलब उसका क्या कर सकते हैं पता नहीं। हर बार मैं समझाती हूँ, लेकिन अगली बार वो सेम सिचुएशन। और अभी छोटे बच्चे हैं तो झगड़ा तो होगा ही, उसका ये कुछ नहीं है। लेकिन वो अपने आप में, मतलब पहले हम अभी झगड़ते थे तो अपने आप सॉल्व करते थे, घर तक कभी आता नहीं था। अभी ये बच्चों का हर चीज घर पे आती है, तो कैसे सॉल्व करना है इस मैटर को? sure, Dipali ma'am. I
I feel Swati ma'am, Dipali ma'am will definitely help you in this situation. Like Yeah. we also face the same thing as a teacher. So I can come, and being a mother of two kids at home, so I can completely relate with your thing. Dipali ma'am, shall Yes. we continue? Yes, yes. Sorry for this inconvenience. So basically, so I hope like throughout this workshop you will get the answer about your question, ma'am. And if there is anything you can like you want to ask, we can have a like we can have a discussion for 10 to 15 minutes after the session. So where all the parents can ask the questions, and hopefully I'll be able to give the answers practically. So like talking about the emotional development of the child, so uh, ये समझना बहुत जरूरी है कि इमोशनल डेवलपमेंट होती कैसे है या फिर क्या है ये, बिकॉज हम जब उनको समझने के लिए जाने वाले हैं लाइक ऑन देयर इमोशनल लेवल, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल फेज एज वेल. So that's why emotional basically wo ek definition I'll just read from this ppt. Emotional development is a complex task that begins in infancy and continues in adulthood. So basically emotional development जो है वो ऐसे एक process नहीं कि एक specific age में जाके develop होती है. So it begins in the infancy only and it continues throughout the life, like into adulthood as well. Like we are adult here, but still we are working, we are developing our some emotions, we are getting to understand something. So it's a long lifetime process that we learn and we identify as well. But talking about the children's emotional development, so what happens is basically children go through many complex emotions like shyness, surprise or anger, then excitement, even surprises. So this rudeness, so these kind of complex emotions are something child is facing in their day to day life. Even as an adult we do face these emotions. So what happens, as a adult we struggle, we are struggling to learn about it, identify it, getting to understand the reasons behind it, that ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, इसको मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ. तो as a if we are adult as a facing we are facing this issues, then सोचिए कि बच्चे कैसे उसको हैंडल करते होंगे. तो इसीलिए बच्चे मतलब उनको वो समझने के लिए बहुत एफर्ट्स या फिर एनर्जी भी लगती है. एंड इफ इट कम्स टू नेगेटिव इमोशन, मतलब जब बच्चे हैप्पी होते हैं, कुछ हैप्पी इमोशंस रहते हैं, वो अगर फेस करते तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती. बट सपोज दे आर गेटिंग थ्रू सम नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, shyness, some guilty feeling, some surprise. सो वो जब समझ के लेते हैं उनका बहुत वहां पे एनर्जी एंड लाइक एफर्ट्स भी लगते हैं उनको. सो एंड एज अ एडल्ट what is we are like we have something good about it is like we can share through our words, like we can verbally express it, we can express through words, we can express through body languages as well. but हर बच्चे में वो expression same नहीं होता, because each child differs, each child is unique, सबका अलग अलग तरीका होता है express करने का. So as a parent we need to learn, we need to recognize it and learn about it कि मेरे बच्चे का emotion express करने का तरीका क्या है, वो बात करके express कर सकता है या वो कुछ एक्शंस के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू, या फिर कुछ सब कुछ कुछ बच्चे हम लोग बहुत बार कंप्लेंट सुनते हैं कि बहुत रोता है. but it is a way of that child to express his emotion, her emotion. So as a parent we need to learn about it. So कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं. So that's why I thought कि ये भावना को समझने के बच्चों के जो इमोशंस है वो समझने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके स्ट्रैटेजी अगर हम कुछ सीखते हैं तो उनको एक इन दिस पेरेंटिंग प्रोसेस हम लोग बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टुडे. एंड सो बेसिकली क्या होता है जब इमोशंस डेवलप होते हैं तो बहुत सारी चीजें भी उस पर अफेक्ट करती है.
तो एज अ पेरेंट वो भी हमको समझ के लेना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चंस हमको ही आते हैं कि मैं तो इतना सपोर्ट करती हूँ, मैं तो इतना समझ के लेता हूँ, बट क्यों नहीं हो पा रहा है? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स एज़ वेल। I guess ma'am, Shikha ma'am, I'm facing some issue while sharing the screen and changing the slides. Okay, ma'am. Uh, uh, okay. Ma'am, just give me a minute. I'll share the slides with you. So if you will be able to share it. Sure, sure, ma'am. Sure. Okay, parents, as you all are here, during the time Dipali ma'am will solve the technical issue, let's have one activity today. There is one thing that we can do with our kids. If your kids are sitting next to you, uh,
So let's do one activity. We'll need one paper and pen for you all. So please arrange it. There will be So I request everyone to be ready with a paper and a pen for the activity that we'll do now. Okay, requesting the parents along with their kids. You all have to write 5 things that you expect from your parents and kids. Parents, you have to write 5 things that you expect from your child. Like if I'll do this activity with my kids, so I'll write 5 things that I'm expecting from my child. Like usually we parents are having a long list that we want to share with we want our kids to do. Discipline, the way of talking, to improve their way of talking, and respecting others, cooperating and understanding the values. So there will be so many things that you also want to share, want your child to do. So please write only 5 things. I request again everyone to keep their mics off, and let's do this activity. Kids, you can write 3 things that you want from your parents. You can write your wishes also, as the Christmas is about to come and the New Year. So if you want a car or a dolls, anything that you want from your parents, please write it down. Let's do that. It will be a fun, to know what we are expecting from our kids and what our kids are expecting from us. And by the end of the session, we will be sharing our thoughts with each other. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Anushri's parent here. Can you please explain Yes. one more time? Question. Yes, Repeat. the activity is nothing that much difficult. Hmm. You just need to write 5 things that you are expecting from your child. Like the 5 points or any 5 things that you feel that my child should do, or my child should be in this thing, or he should improve in which 5 aspects. So please write it down. And at the same time, I request the children, our kids who are sitting there next to their parents, they also need to write the things that they are expecting from their parents. Like if I'll talk about myself, if I'll give this opportunity to my daughter, she will write 10 things in a list. Yeah, I want this. So similarly, we are also having some demands with with our children. So let's write those things, and by the end of the session, we will share our opinions. Okay. Thank you. Okay, thank you so much, ma'am. Dipali ma'am, shall we start? Yes, ma'am. I have shared this Yes, PPT I with got you. that. I got that. Yes. Okay. So till the time ma'am will share the PPT, we will continue with the topic. So we were talking about that, what are the effects, what are the effects that which will we will have on emotional development of our child. So basically, the first will be like, your love does affect your child's emotional development. So how this love will affect? So yes, basically, so just if I'm
Okay, I'll give you one example like how we can relate to this. That suppose your child is complaining about something that his friend or her friend have teased him or her on his color or body type or anything which is like your child may feel bad about. So agar aise kuch hota hai and the child is complaining to you, this has happened in my friend and someone is teasing me on this. So अगर वहां पे एज अ पेरेंट आप उसको समझ के लेते हो दैट यू आर गिविंग दैट फीलिंग दैट जो कोई भी है, जो कोई भी फ्रेंड है, जो कुछ भी लाइक वट एवर दे आर टीजिंग यू ऑन वट एवर एस्पेक्ट. So it doesn't matter. As a parent, I am there with you. I am there to support you. I am there, you know, like I like the way you are. It doesn't matter how you look, how heighted or how small you are, or how thin or fat body you are having. Doesn't matter. So this kind of conversation with the child will automatically turns into that feeling of security from the parent. Then child will feel more trust on you, that reliability, that child, the sense of reliability will get from you. So that's so all these things will turns into love. So yes, this love do affect child because this is the basic emotion that every human being needs in life. So why not child then? Because it is something that which is very important for them, and they should feel that they are being loved throughout their life. And that love is not something conditional कि आज तुमने कुछ अच्छा किया है तभी मैं तुमको प्यार करूंगा, तभी मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा. ऐसे नहीं होता वो. So what happens, this unconditional love from parents should be there in through the life, through the developmental phases of the child. And in way, in all the situation, though it will be negative or positive. So that's why love does affect on child development. And sometimes it is not only that uh, you can express your love from words only. It can be material. It can be through the gifts. Like sometimes we gift our child something which he wants, she wants. We gift something on birthdays. We gift something on small achievements. So these kind of things can be treat as a gesture of love from parents. So yes, these small things does impact on child's emotional development. That is why your love is very much important when it is considering when we are considering on like affect of affect on emotional development part. And second is like acceptance, your approval as a parent. So child does see you as a role model of you. Like you are the first thing that उनके life में जो है वो एक as a adult, as a responsible or uh, as a close one. So as a parent, they are looking at you like this. So basically your acceptance and approval is very much important for your child. And suppose I'm just giving you another example ki your child had fight with friend. Okay, and in the anger he slapped his or her friend in the anger. And after some time or after coming home, the child is explaining you that I slapped my friend, but now I'm feeling bad about it. What should I do? So he's asking you this question. So in this, in this situation, as a parent, we can support there, that we can say these things like, it's okay. This is just a small mistake. So acceptance we need to show there, that everyone does this kind of mistakes, and mistakes is okay. We get to learn so much from the mistakes. So yes, so if we show the acceptance towards the child's mistakes, so that child will get the positive attitude toward their mistake. And they will build it will help them to build more confidence about it, that if I does something bad, something wrong, if my parents is supporting me in that, not in a bad like negative way, that supporting मतलब जाओ कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे नहीं. But my parents are supporting me, explaining me how this
mistakes you can work, like how you can work on your mistakes, and next time how what kind of things you can consider before if something same happen again. So this kind of assurity you're giving to child, so it is the child is getting approval from you that my parents are accepting my situation and mistakes. So yes, so what will happen is your child is will be learning to develop that emotional freedom, that he or she is getting that emotional freedom, and it will automatically help them to develop as an independent personality. So acceptance of situation is a key step in emotional development. So even as a parent, if we do some mistakes in front of our child, we need to learn how to accept it in a positive manner. सो इट शुड बी नॉट लाइक जस्ट गलतियां हो रही है एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाद में सेम गलतियां रिपीट रिपीट हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए. We should that you as a parent we need to understand that what are the things we can learn from that mistake, and then next time we shouldn't do that. हर बार अगर वो गलती हो रही है तो उससे हम लोग क्या चीजें अच्छी ले रहे हैं, और वो नेक्स्ट टाइम कैसे उसमें सुधार ला रहे हैं. ये अगर आपका बच्चा ऑब्जर्व भी कर रहा है ना, तो इससे भी वो बहुत सीखेगा. क्योंकि क्या होता है, ये जो डेवलपमेंटल फेज होते हैं बच्चों के, इट्स ऑल अबाउट सोशल लर्निंग फेज. सो जो कुछ भी पेरेंट्स घर पे सिखाते हैं या फिर बिहेव करते हैं, उससे बच्चे ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीख रहे होते हैं. दैट्स व्हाई this acceptance and approval from parents is very much important for your child. Even while showing this acceptance, uh, we need to teach them about how every individual is different. Like your friend is different, their thinking is different, their background is different, so their perception and opinions will be different, right? So we need to teach them about it and how we can respect them, that too. So individual differences, if we teach some individual differences to child in the very early stage. I'm not telling that primary के बच्चों के लिए सिखाना जरूरी है, but when child is in fourth or third और fourth grade से हम लोग वो सिखाना चालू कर सकते हैं, so that जो भी behavioral अच्छी changes है हम लोग जितने जल्दी सिखाना चालू करते हैं, उतने जल्दी वो वहाँ पे develop होते हैं, and उतने जल्दी बच्चा एक responsible that child will get to know more about their own emotions, their like, and how we can use in when we are going in society. So ये एक emotional development के लिए बहुत important रहता है. Now talking about third one. So third one is, I guess, examples, right? So examples mean what? That our child is looking at us as a parent, but we are the first role model for them. So example is all about modeling behavior. So as a parent, what we are हर मतलब हर बच्चे के लिए उसके मम्मी या पापा जो है वो कोई भी सुपर हीरो से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. दे सी देयर यू एज देयर फर्स्ट सुपर हीरो, सुपर हीरो लाइक मॉम हो या डैड हो, तो वो आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं. सो वी नीड टू lead them by examples, a good behavioral examples. So whatever the behavior we are teaching them, so we need to think about that we are teaching more effectively by modeling those behavior than giving just long lectures and like boring lectures. ऐसे ना लगना चाहिए. So examples should be lead by behavior of our own. So ऐसे नहीं सिर्फ बता रहे हैं ये करो, ये ऐसे करना चाहिए, किसी का एग्जाम्पल दे रहे हो, ऐसे नहीं. That thing should child should see in you while you are behaving in front of them. उनके सामने अगर आप कोई बिहेव कर रहे हो, तो that thing should be in you, that they will learn about it, they will observe you. So yes, because as I told you that in this phase every child is learning through social
ऑब्जर्वेशन, सोशल लर्निंग उसको बोलते हैं हम। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं बच्चों के। हमारे, हाँ, एज अ एडल्ट हम लोग इतना ऑब्जर्व नहीं करते, बट बच्चों के ऑब्जर्वेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। एंड दे आर जस्ट उनको पता नहीं है, बिकॉज दे आर, इफ दे आर लुकिंग एट यू एज अ रोल मॉडल, सो वॉट एवर द बिहेवियर यू आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ देम, they will consider it as a good behavior, that my parents are doing this, it means it is good, so I should do that. सो अगर बच्चे ऐसे हमको ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर गिविंग सम गुड बिहेवियरल एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ देम, एंड वॉट एवर द वर्ड्स वी आर यूजिंग एट होम, वॉट एवर द वर्ड्स और like behavior we are doing in front of them, we should watch it and use it carefully. Whatever the words, sometime happens कि हम लोग कुछ कभी फोन पे बात करते करते कुछ बोल देते हैं, बट हमको पता ही नहीं चलता बच्चा वहां पे खेल रहा है, दो he is not listening, paying attention to our phone calls, but then he is socially learning that thing. So that's why it is important. So whenever we are around our kids, whenever we are around any kids, we should watch our behavior and language and even words as well. So if you want to decrease, I'll just give one more example here. uh, so suppose koi uh, so suppose you want to decrease some bad habits of your child, like using of mobile phone, like excessive use तो आज बहुत normal complaint है parents की तरफ से, then watching TVs or playing or not doing homeworks on time. So these are the basic complaints we hear daily in like daily in our school as well from parents. So अगर कोई behavior decrease करना है, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत मोबाइल फोन यूज कर रहा है एंड ही इज नॉट एट ऑल लिसनिंग टू मी, कुछ भी करो सुन ही नहीं रहा है, बट एज अ पेरेंट वी नीड टू मेक श्योर दैट आर वी डूइंग द सेम बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ देम। हम भी अगर बच्चे के साथ बैठे हैं तो कितने टाइम हम लोग मोबाइल पे है, अननेसेसरी हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उनके सामने, तो आर वी वॉचिंग आर एक्शंस एज वेल? So we need to consider that when we are working on this emotional development part of the child. So basically examples, to set good examples in front of them, we should be respectful for that and truthful for that. ऐसे नहीं कि बच्चों को सिखाना है इसलिए मैं अभी उसके सामने बहुत अच्छा बिहेव करूंगा मैं, बट बाद में कहीं और सिचुएशन में जाके मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंसी भी बच्चे ऑब्जर्व करते हैं. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल फॉर दैट बिहेवियर एंड ट्रूथफुल in every situation whenever we are in front of the child. So going to the next point, it's discipline. So yes, discipline is something where it is very important thing that, and हर parents की एक इच्छा रहती है that my child should be disciplined in every manner. So discipline is something which is outline of desirable social behavior. क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब बच्चे को किसी सोशल सेटिंग्स में भेजते हैं, जैसे स्कूल है, कोई फंक्शंस है, या फिर सोसाइटी के गैदरिंग्स है, या इन सोसाइटी में बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजते हैं, तो वी वांट आवर चाइल्ड टू बिहेव इन सर्टेन वेज. she should behave in certain ways, or he should behave in certain ways where उसके कुछ complaints नहीं आने चाहिए, किसी ने आके बोलना नहीं चाहिए आपके बच्चे ने ऐसे किया, या फिर आपका बच्चा जानबूझ के किसी को तकलीफ दे रहा है, किसी को मार रहा है, या फिर बार बार बताने के बाद भी सेम बिहेवियर कर रहा है. सपोज दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन ग्रुप, बट बैटिंग करने के लिए चांस ही नहीं दे रहा है किसी को, खुद को ही करना है. सो इफ वी गेट सच कंप्लेंट्स फ्रॉम स्कूल और इवन फ्रॉम सोसाइटी और इवन फ्रॉम एनी अदर पेरेंट, so we don't feel good about it, right? Whenever we get such complaints about our child, so that's why as a parent everyone wants to uh, uh, implicate this discipline into child. So uh, and it is very important for us to if we want to discipline our child, we should start in the early age only. So here like stubborn behavior is like
is something जो बहुत बार पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं. इवन एज अ काउंसलर बहुत से पेरेंट्स से मैं मिली हूँ, तो उनका ऐसा कहना है कि बहुत स्टबर्न है, बिल्कुल सुनता नहीं है, कितना भी समझाओ, कितना भी प्यार से बताओ, कितना भी डांटो चिल्लाओ, कभी पनिशमेंट भी दिया है फिर भी नहीं समझता, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है. बट ये स्टबर्न बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, या फिर हम लोग सिर्फ प्यार से समझा रहे हैं, हर बार प्यार से ही समझा रहे हैं? हैव वी चेंज द स्ट्रेटेजीज? या फिर सुन नहीं रहा है, उसको मारा बहुत, उसको चिल्लाया बहुत, फिर भी नहीं सुन रहा है? तो these kind of things, then if something is not working on child, we should think about other strategies as well, right? Because क्या होता है ना, ये एज पे चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो पेरेंट्स को इजीली मैनिपुलेट कर रहे हैं, कर सकते हैं. एंड एज अ पेरेंट, बिकॉज वी आर लविंग देम अनकंडीशनली, हम लोग इजीली मैनिपुलेट हो भी जाते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वॉट एवर द सिचुएशन इज देयर, टू डिसिप्लिन लगाने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, we should handle that situation with love and respect only, but by being strict and firm in our actions. मतलब प्यार से तो करना ही है, रिस्पेक्टफुली करना ही है, बट एज अ पेरेंट वी नीड टू शो सम strict and firmness in our words and behavior as well. Suppose I'm just giving you example here that the complaint, your complaint is that my child is not sitting for a homework, and I'm getting complaints from teacher that he or she is not doing homework, completing homework daily. So what should I do in this situation? So मैंने उसको बहुत बार समझाया, मैंने उसको उसकी पसंद की चीजें लाके दी, मैंने उसका टीवी देखना बंद करवाया, उसका मोबाइल का देखना कम किया है. ये सब बहुत से पेरेंट्स बताते भी हैं. बट इसमें क्या होता है, वो फर्मनेस एंड स्ट्रिक्टनेस जो है कभी कभी हमारा लूज होता है, इसलिए वो बिहेवियर चेंज नहीं दिख रहा है. वो भी मैंने ऑब्जर्व किया है पेरेंट्स के थ्रू. सो सपोज दिस होमवर्क सिचुएशन इज देयर. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग टू देम कि बैठ जाओ, पढ़ाई के लिए बैठ जाओ, वी कैन टेल देम दैट आई कैन सी दैट आई नो तुमको टीवी देखना अच्छा लगता है. ऐसे, like I'm just giving you the example, I know you would rather watch TV than doing your homework. So यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों को एक फीलिंग आएगा that my parent, my mother or my father is understanding that I want to watch TV, right? So they know that what I want now. But यहाँ पे as a parent हम लोग to show that firmness and to show that strictness, we can say again, and homework needs to be done first. So if we say this, and it's not like I know you would rather watch TV, but so using replacing and with but. So but homework needs to be completed. So but is something that child is not taking you seriously. So if you change and, I can see that I can see that you want to watch TV, and homework needs to get complete first, so that child can sense that firmness in your behavior, in your words. So so child, if the child is getting that, so obviously he is going to sit for homework and then he will watch TV. So these kind of changing in words, changing in uh, some strategies will also is going to help us to change that behavior, and make sure that child is getting discipline in that behavior. So क्या होता है कि discipline is also important in emotional development, because it is something that we teach them to how to become a responsible, or how to be independent, positive and reasonable. So while teaching them some disciplines at home, we have to make sure that these disciplines our child is following at school as well, at some social, another social settings as well. So ऐसे नहीं कि हम एज अ पेरेंट हमारे सामने सिर्फ वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हर डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, पर स्कूल में टीचर्स की बात ही नहीं सुन रहे हैं. तो ये चेंजेस अगर दिख रहे हैं, तो वी नीड टू थिंक अबाउट आवर एक्शंस प्लान देन. So that's why it is very important to understanding this
changes of behavior, and if it is there in there at home only, or the child is following at school as well. So in in young children's, like जैसे primary sections के बच्चे हैं, so to make them learn some discipline at home and at school, as a teacher and as a parent, we can use some simple reward and consequences strategy here, because it is very small age that at the end we are the only one they are looking at us as an idol. So whatever the things we are teaching them, they will going to they will going to listen to us and understand it. So if we use some reward techniques here, if we use some consequences here, it is going to help them. जैसे सिंपल टाइम, सपोज घर पे बच्चा टीवी सॉरी मोबाइल फोन का यूज बहुत कर रहा है, नहीं सुन नहीं रहा है, तो यहाँ पे सिंपल टाइम आउट जो है कि उसका टाइम ना सिंपल टाइम आउट स्ट्रैटेजी कैन वर्क इफेक्टिवली फॉर स्मॉल एज चिल्ड्रन of primary school age children. So as as a counselor, I'll be sharing some techniques with you in more in further sessions as well, so that you can use at home, so where you can discipline your child, and think about even like what are, where as a parent we can change our strategies, and we can develop some good habits and good discipline in our child. So this is all that your love, approval, discipline and example does affect your child's emotional development. So ma'am, can we change the slide? Yes, ma'am. Yeah. So one question from my side to all the parents who are joining this session today. So just think about these questions you can read from the screen. जो यहाँ पे questions है उसको just एक बार पढ़ देखो. I'll also read for you. Is my child talking or sharing with me when he or she is upset? You just have to think about every question and relate. You can relate to you. Am I recognizing emotions by face and body language? Am I avoiding phone calls and ongoing tasks while my child is talking to me? जब मैं फोन पे जब मेरा बच्चा मेरे से बात कर रहा है, तब मैं फोन कॉल्स या फिर जो कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं अवॉइड करके उसकी तरफ ध्यान देती हूँ क्या? When my child is crying while sharing something, do I provide undivided attention and space? Hold his or her hand or hug when needed? जब बच्चा रो के कुछ शेयर करते टाइम रो रहा है, वी कैन सी दैट, हम लोग वो देख रहे हैं, तब मैं पूरा मेरा फोकस उसके ऊपर दे रहा हूँ क्या? जब जरूरत है तब उसके हाथ पकड़ना, उसको एक लाइक दैट ट्रस्ट वाली फीलिंग, या फिर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड उसको गले लगा के उसको शांत करना. एम आई डूइंग ऑल दिस थिंग्स? My child understands my feeling, asks and supports me when I am emotionally disturbed. जब मैं खुद एज अ पेरेंट इमोशनली डिस्टर्ब होता हूँ, या फिर मदर जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब होती है, तो मेरा जो बच्चा है वो आके मुझसे बात करता है क्या? मुझे मेरे इमोशंस जो है वो समझ के ले रहा है क्या? मुझे पूछता है क्या कि क्या हुआ? ऐसे अगर क्वेश्चंस यू नो ये जो क्वेश्चंस है, अगर इनमें से कोई भी चीज, अगर एक भी चीज अगर आप आपको लगता है कि यस इट इज अप्लाइंग टू मी, if you think that Papa, these things are you know these things are applying to me, you can just raise your hand by using the emotion, that emotions from the Zoom, I guess.
Should I share, change this slide? If you want. No. I feel Tasha's mother is here. Yeah. Mrs. Yeah, Thakur, yeah. she want to say something. No. I asked that if you Okay. think that whatever the things I have written on this slide, do you think that this is applying to me as a parent? Me too, ma'am. Yeah. Okay. Yes. So if it is, then ma'am, please change the slide. Yes, if it is applying to you, it means this all these are red flags of your in your parenting. Sorry, green flags. So it means that these things should be needs to be there, and uh, when we are interacting with kids, those things should be there. Ma'am, could you please just go back to the slide? Yes, thank you. So yes, it is very important for us to as a parent, that whenever my child is talking to me, or sharing something with me, I should attend my child fully. So if I am doing something, I can stop. If I'm I can stop my work there, or if I'm on like I'm getting any phone call in between, I can avoid that phone calls, because my child is important to me, and if he's or she is sharing something, that is the most important thing for me currently. And जब मेरा बच्चा कुछ अपसेट होता है, या फिर कुछ सैड होता है, तो वो फर्स्ट मुझसे मतलब मुझसे आके सारी बातें शेयर करता है. So this is a very important green flag of that you are uh, understanding your child emotionally. Then you are, as a parent, you are able to recognize your child's emotion through the body language and face, by just looking at his or her face. So it means that you are giving the that you are, as a parent, is understanding your child on emotional level. Then you are giving undivided attention, you are giving the hugs whenever it is required, you are holding your child's hand whenever it is required, when he or she is crying in front of you while sharing something. So yes, it is a very good green flag for you as a parent. And even when you are feeling feeling disturbances or any other emotional situations is happening in your life at home, your child is coming to you and asking you. Just imagine that your child is only 6 or 7 years old, and he's coming to you and asking you कि क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ पापा, आप दुखी लग रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप मुझसे शेयर करोगे क्या, कर सकते हो क्या. तो ऐसे अगर बच्चा आपको आके पूछ रहा है, इट मीन्स दैट योर चाइल्ड इज वेरी वेल डेवलपिंग ऑन इमोशनल लेवल. So all these are very important green flags of parenting, to get to understand your child on emotional level. So yes, ma'am, we can go on next slide. Yes. Now talking about the red flags. So yes, green flags तो है ही. जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुछ चीजें करनी है तो we should uh, we should understand some important points as a parent. But sometimes how what happens is, many red flags are there which we miss out in our behavior. So I just wanted to make you aware about it. So first is like criticizing your child, or when he or she is sharing their experience, or any feelings. So suppose I am just giving you one example here, that your child is sharing that in the examination, uh, he or she have missed out some questions, because वो मुझे मतलब बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ याद नहीं आया, इसलिए कुछ क्वेश्चंस मेरे मिस आउट हो गए.
वो अगर अपना तो आपका बच्चा आपके सामने शेयर कर रहा है, एंड while sharing that he is crying in front of you, as a parent you can see that वो रो रहा है, मतलब वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, राइट? बट स्टिल यू नो व्हाट हैपेंस इज, कभी कभी हम लोग उसको इमोशनल लेवल पे समझने के लिए नहीं जाते, बट गुस्सा कर देते हैं that you are just giving me the you are just giving me the रीजंस दैट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमने पढ़ाई तो की नहीं थी, पूरा दिन तो फोन पे बैठे थे, टीवी देख रहे थे. जस्ट डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस नाउ, you are just using the reasons that and crying मेरे सामने झूठा झूठा रो रहे हो, तो don't give me such excuses. So this kind of criticism it's something your child may feel trauma, traumatized, ये ट्रॉमा के जैसे वर्क करता है वहां पे बच्चों के लिए. सो क्योंकि उसको पता है कि मेरी मतलब इन दैट सिचुएशन व्हाट वेर माय फीलिंग्स, मेरे वो सिचुएशन में मैं मुझे क्या फील हुआ था या फिर मैंने कैसे महसूस किया था, मुझे कुछ याद नहीं आया क्योंकि मैं पूरा ब्लैंक हो गया था. ये बच्चों को पता है, बट एज अ पेरेंट दे वांट यू टू अंडरस्टैंड देयर दैट सिचुएशन, बट समटाइम वी मिस आउट सच थिंग्स इन आवर एंगर, और अगर यही सेम बिहेवियर पहले भी हुआ है, तो हम लोग उसको कंसिडर करते दैट ही इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड जस्ट गिविंग मी द एक्सक्यूजेस टू सेव हिम, और मेरी डांट खाने से उसे बचना है इसीलिए. तो ऐसे टाइम पे अगर कुछ हो रहा है ऐसे, तो दिस इज अ वेरी important red flag in your parenting. Then leaving the place or stopping the child by giving the reasons, like जब बच्चा कुछ आपसे शेयर कर रहा है, आपसे कुछ important बातें शेयर कर रहा है about the school or about his life, बट बीच में ही हमको कुछ कॉल आ जाता है, तो हम लोग वो कॉल उठाते, बच्चों को वहीं पे बोलते हैं कि रुक जाओ, बाद में बात करेंगे, या फिर वहां से उठ के कहीं और निकल जाते हैं. या फिर बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि घर पे जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं और बच्चा हमसे कुछ शेयर कर रहा होता है, तो हमको किचन में जाना है क्योंकि हम लोग खाना बना रहे हैं, कुछ तो बिजी है हमारे काम में, तो ये हमको इम्पोर्टेंट है. बट वहां पे अगर हम लोग बच्चे को वहीं पे स्टॉप करते, तो दिस इज अ वेरी रेड फ्लैग फॉर दैट चाइल्ड, दैट द चाइल्ड इज गेटिंग द फीलिंग दैट माय मॉम, माय मदर इज और माय फादर इज नॉट गिविंग अटेंशन टू मी. So yes, these things impact on emotional level to of your child. Then humiliating, comparing with other children. So ये बहुत बार होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो यूनिक है, हर एक बच्चा डिफरेंट है, ये कभी कभी भूल जाते हैं. और इट इज नॉट समथिंग कि आई एम जस्ट ब्लेमिंग यू एज अ पेरेंट, बट होता है कई सिचुएशन में हम लोग वो भूल जाते हैं कि हम लोग बच्चे को कंपेयर करने लग जाते हैं. सो हर एक बच्चा अपने अपने स्किल्स के हिसाब से या फिर एक्टिविटीज के हिसाब से अलग अलग, उसका इंटरेस्ट मैच डिफर करता है, तो उसके स्किल्स भी डिफर करते हैं. वो अभी अगर हम लोग कभी कभी एज अ पेरेंट उसके सब्जेक्ट्स के स्कोर जो है एग्जाम में उससे भी कंपेयर करने जाते हैं, कभी कभी उसके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करने जाते हैं. तो ये सब चीजें जो है हम लोगों को वहां समझनी चाहिए दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, सो वी कांट कंपेयर देम ऑन एवरी एस्पेक्ट. अगर मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसने मैथ्स में भी अच्छा करना, स्कोर करना ही चाहिए, क्योंकि उसके फ्रेंड तो सारे अच्छे स्कोर करे, उसको क्या प्रॉब्लम है. या फिर हमारे सोसाइटी के तो सारे बच्चे इतना अच्छे से सारे सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इसको क्या प्रॉब्लम है जाने के लिए, ये सिर्फ आलसी हो गया है, ये जस्ट रीजंस दे रहा है. तो ऐसे अगर छोटे छोटे हम लोग comparisons करते हैं, तो it might your child might get feeling of humiliating in front of others. क्योंकि बहुत बार ये जो ह्यूमिलिएशन और कंपैरिजन वाली फीलिंग है बच्चों के कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए बहुत जिम्मेदार होती है. तो हम लोगों को उस नजरिए से सोचना है कि हमारा बच्चा जिस चीज में ज्यादा अच्छे से कर रहा है उसको हम लोग फोकस करें. इफ ही इज गुड इन
स्पोर्ट्स, तो वी शुड फोकस मोर ऑन स्पोर्ट्स. ऐसे नहीं कि पढ़ाई के लिए फिर मत ही करो, ध्यान मत दो, ऐसे नहीं. बट वी शुडंट फोर्स देम टू गेट द हाई स्कोर इन एवरी सब्जेक्ट, राइट. इवन सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग अगर सोचने जाते हैं तो हर बच्चा मैथ्स में टॉप नहीं कर सकता, हर बच्चा इंग्लिश में उसको आना ही चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट. या फिर हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स जो है 70 अबाव ही चाहिए. जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको हम लोगों को एक बार सोचने की बहुत जरूरत है यहाँ पे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक not praising the efforts but focusing on outcomes only. So yes, sometime what happens, if we are thinking of good marks or trophy medals only, then we may we need to, like, we are not allowing them to learn from their failures. If as a parent we are just focusing on good marks and what the trophies my child is getting, what are the achievements he is uh, uh, getting from the school or from the other activities, or how many medals he is getting, so again I'm going in the comparison. So ये as a parent ये बहुत common है कि comparison करने के लिए बहुत बार comparison होता है. But whenever it happens we need to we need to shift our focus to our child only. So ये एक बहुत जरूरी बात है यहाँ पे. So because we don't know what are the negative emotions or what are the positive emotions my child is facing throughout the process. अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बच्चा कुछ efforts ले रहा है कुछ हासिल करने के लिए, if my child is working very hard to get good marks in the examination, so what are the what are the efforts he is doing, or what are his feeling while doing that. कुछ negative emotions है क्या जिसपे वो he is feeling stressful about, और कुछ अच्छे भी emotions है क्या उसमें, that where I can even talk to him and help him to get out of that negative emotions while going through that process. So ये समझना बहुत जरूरी है, because as a parent we need to help them to develop the growth mindset and how to set realistic expectations from self. But as a parent we need to first learn about it, क्योंकि हमारा बच्चा हर चीजों में अच्छा ही करे, ऐसे अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम लोग करते हैं तो दिस इज अ वेरी important red flag that we are using in our parenting. Then talking about only complaints, no compliments. So yes, sometimes it happens many in our school, and even when I do counseling session with other children, so many student complain that my parents use sarcastic, do sarcastic comment on me, और रोते हैं बच्चे. बहुत बार ऐसे हुआ है कि पेरेंट्स ने ऐसे सार्केस्टिक कमेंट्स दिए हैं एंड मैंने बताने का ट्राई किया, बट दे वर नॉट एट ऑल लिसनिंग, पेइंग अटेंशन और लिसनिंग टू मी. सो ऐसे जो सार्केस्टिक कमेंट्स या फिर कंपैरिजन वाली चीजें अगर हम लोग करते तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन कंप्लेनिंग बिहेवियर्स कि तुम टीवी ज्यादा देखते हो, तुम मेरी बात ही नहीं सुनते, तुम सुबह जल्दी उठते ही नहीं हो, या फिर तुम स्कूल का होमवर्क अच्छे से नहीं करते, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स देखो कितना अच्छे से मम्मी की बात सुनते हैं, तुम्हारे क्लास के बच्चे देखो कितना अच्छे से स्कोर कर रहे हैं, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस. सो ये जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स है बच्चे इसको याद रखते हैं. इट्स नॉट समथिंग कि वो अभी बताया तो भूल जाते. हमको लगता है कि इसको कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दिस. दे आर ऑब्जर्विंग एंड वो याद रखते हैं वो सब चीजें. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वॉट एवर द कंप्लेंट्स वी आर complaints we are telling to our kids, we need to make sure that it is not impacting on their emotional level. So what happens, ऐसे अगर कंप्लेनिंग बिहेवियर्स अगर बार बार बच्चा ऑब्जर्व कर रहे पेरेंट्स की तरफ से, सो एट द एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका ये हो सकता है कि बच्चे की जो सेल्फ इमेज है वो डेवलप होने में बच्चा बहुत स्ट्रगल कर सकता है. तो इसलिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते, या फिर इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते, या फिर कुछ अगर ऐसी सिचुएशंस आते जहाँ पे उनको वो इमोशनल बहुत बर्डन आता है, तो दे आर नॉट एबल टू हैंडल बाय देमसेल्फ, और इवन दे आर नॉट एबल टू शेयर दोज थिंग्स. वो सरप्रेस करने लगते हैं वो फीलिंग्स. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट
we need to think about our behavior, if we are only complaining or we are giving the compliments as well. So ठीक है, कोई अगर बिहेवियर है जो हमको अच्छा नहीं है, हमको उसमें सुधार लाना है, तो we can work on some strategies, but it shouldn't feel for the child it shouldn't feel like that my parents is only complaining about this, but they are not looking at me that what I am doing to change that behavior. तो ऐसे नहीं होना चाहिए, right? And the last one is highly controlling child's actions. So as a parent we should be firm but have fair expectations from child's behavior, because because what happens is, like, we should be firm, like we if we achieve we are focusing on achievements, grade, or some just focusing on some prestigious hobbies of the child, or what are the awards my child is getting, because that is important for you. If it is important for you more than your child's emotion and progress, then you need to rethink about your goal as a parent. बिकॉज यस, हमको ऐसे होता है, हर पेरेंट्स की एक इच्छा है कि यार मेरे बच्चे के ऊपर मैं इतना एफर्ट्स ले रहा हूँ, इतना अच्छे स्कूल में डाला है, इतने अच्छे अच्छे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट है, उसके हॉबीज के रिलेटेड उसको कुछ एक्टिविटीज या फिर क्लासेस लगाए हैं, तो व्हाई ही इज नॉट परफॉर्मिंग। तो ये जो है, मतलब हमको उसके ऊपर एक बार सोचना है कि ये हमने उसके लिए लगाया है या हमारे लिए लगाया है। ये जो सारे गोल्स है हमारे, तो वो उसके गोल्स है। एज अ पेरेंट वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट ही शुड डू दैट, यू शुड डू दैट, एंड यू शुड अचीव दैट ओनली। सो ऐसे है कि कर रहे हो मतलब अचीव करना ही करना है। अगर सोच कर रहे हो ना पढ़ाई, तो फर्स्ट आना ही आना है। अगर ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो वो कभी वर्कआउट नहीं होगे। सो दैट मीन्स दैट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन चाइल्ड्स progressive growth. We are just focusing on the achievements only. So that as a parent we need to rethink about our goals, whatever the goals we are having and we are expecting from our child. So because and sometime it might happen कि बच्चे के complaints भी मैंने बहुत बार सुने पेरेंट्स से रहते हैं कि मेरे मम्मी पापा जो है वो सबके सामने, जब वो सोसाइटी किसी फ्रेंड्स के सामने रहते, कभी रिलेटिव्स के सामने रहते, या फिर कभी इवन स्कूल में आते हैं, तो they are praising me, they are praising me, they are giving me compliments in front of everyone, but when we go home they are just shouting at me that whatever the achievements you are getting, it is unreasonable. So मेरी ऐसे भी बोले हैं बहुत से, मतलब बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैंने अचीवमेंट मतलब कुछ तो हासिल किया है अभी, दैट आई हैव गेट समथिंग, आई हैव अचीव समथिंग टुडे, बट इट इज नॉट अप टू द मार्क आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ऐसे लैंग्वेजेस में बातें बच्चों से करना, सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर यहाँ पे दिख रहा है दैट माई पेरेंट इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल टू मी। मतलब सबके सामने अलग बिहेव होता है उनका और घर पे अलग होता है। सो वो इनकंसिस्टेंसी भी यहाँ पे बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन अ बिग रेड फ्लैग फॉर यू एज अ पेरेंट। सो बिकॉज अगर ये सब चीजें हम लोग अगर कर रहे हैं तो वी आर नॉट एबल टू मेक आवर चाइल्ड to take his decision by himself or herself, or we are not allowing them to try the things, learn the things, relearn the things, or unlearn something. So because कुछ मिस्टेक्स है उससे ही हम लोग ये सब सारी चीजें सीखते हैं। सो इफ वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग दैट अगर कुछ कर रहे हैं तो अचीव करना ही है, तो हाउ योर चाइल्ड कैन लर्न समथिंग फ्रॉम मिस्टेक्स? So as a parent, we need to think about all these red flags as well, right? Shikha ma'am, you wanted to ask? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. As we are running out of the time, so Yeah, I yeah. request you and parents also to have some Q&A session. In case parents are having anything that they want to share,
please do, I'll request them, please do share with Dipali ma'am. She is the right person to solve your queries. And if we are getting a good response from you all, we will be trying, we'll try to conduct one more workshop on this topic only. And there again, Dipali ma'am will be sharing her opinions and her strategies with us. So parents, I'll request you all to start having your, if you are having any doubts or any queries that you want to resolve it with the help of the Parliament, please do share your opinions, your feedbacks, or your queries. Yes. You can start asking the questions. हॅलो मॅम, स्वाती बोलते. मराठीत बोललं तर चालेल का? हो बोलू शकता. तुमचं सेशन छान होतं. त्यातले काही पॉइंट्स म्हणजे नक्कीच चांगले होते. मला एक सांगायचंय की आता आपण वर्किंग पॅरेंट्स आहोत, तर संध्याकाळी 8 वाजता घरी येतो. त्यानंतर एक्सपेक्ट करतो की आम्ही थोडा आराम करू, थोडं टीव्ही बघू. पण मुलं मग आम्ही मुलांना म्हटलो की आता माझी एकटीच मुलगी आहे. तिला जर म्हटलं की तू टीव्ही बघू नको, तर ती कंपेअर करते आमच्याबरोबर की तू बघू शकते मग मी का नाही. आता ह्या अशा सिच्युएशनला काय करायचं आपण? म्हणजे कसं फेस करायचं? कारण ऍज अ पॅरेंट म्हणजे इच्छा असते ना आपली की थोडा वेळ बघूयात. तर त्याच्यावर काही होऊ शकेल? ओके. सो इथे हे क्लिअर आहे की सी आता ॲज अ पॅरेंट मी इथे म्हणणारच नाही की तुम्हाला जे आवडते ते तुम्ही करणं बंद करा, कारण तुम्हाला पॅरेंटिंग चांगलं करायचंय मुलांसमोर. सो याचा अर्थ हा नाही की आपल्या इच्छा मारून आपण सगळा फोकस मुलांवर द्यायचा आहे, राइट? सो इथे काही एक छोटा टेक्निक्स तुम्ही वापरू शकता. जर तुम्ही तुम्ही किती वेळ देताय टीव्ही बघण्यासाठी, तो एक तुम्ही बघितला पाहिजे. की असं नको व्हायला, की मग बाकीच्या महत्त्वाच्या गोष्टी सुटून फक्त तुम्ही सुद्धा टीव्हीवर फोकस देताय किंवा तुमचा टीव्ही बघण्याचा वेळ काय आहे, त्याचा एकदा तुम्ही तो लक्षात घेतला पाहिजे. दुसरं एक आहे, की मग मुलांचं जे आहे, की मग ते पण म्हणतात, की "तू बघतीयेस तर मला का नाही देते?" सो आपण त्यांना कधीही टीव्ही बघायला अलाउड करू शकतो. पण त्याच्यासाठी सुद्धा एक टाईमलाईन आपण त्यांना सेट करून दिला पाहिजे. राइट? कारण सपोज तुम्ही घरी येऊन टीव्ही बघताय, पण मग त्याच्यानंतर तुम्ही स्वतःला एक अर्धा तास देताय, तर तुम्ही मुलांसाठी म्हणून पुन्हा अर्धा तासाची वेळ सेट करून ठेवू शकता, की तूही बघ, मी तुला नाही म्हणत नाहीये. तूही बघू शकतेस. पण आपण दोघीही एक टाईम लिमिट फॉलो करणार आहोत, तरच आपल्या बाकीच्या गोष्टी होणार आहेत. सो तुम्ही कधीही त्यांना एक टाईम लिमिट सेट करून देऊ शकता. सो याच्यामध्ये असं दिसेल, की माझे पॅरेंट्स स्वतःसाठी जे करतायत ते चांगलं त्यांना वाटतंय, पण मला अपोज करतायत. सो ती फीलिंग त्यांना कधीच येणार नाही. सो ते इक्वालिटीची फीलिंग पण असते मुलांमध्ये, की पॅरेंट्स करतील ते खरं आणि आम्ही करू ते सगळं चुकीचं. ते कधीच येणार नाही. We are Yes. having one more parent, Ane. आणि Yeah. Is it Yeah, ma'am. possible, Hello. ma'am, if you can switch on your camera? It will be wonderful for us to see you. Sorry for now, I cannot switch on my Okay, camera. no issue, no issues, Okay. no issues. Please continue with the So, question, ma'am. yeah. As a working woman, I have a question. As we are working from home, so sometimes what happen, we have an important call. So that time, child will come and talk to us, like just play with us and do something with us. But that time we are not able to focus on that. So how to handle that? Yeah. Because some important call we cannot avoid, and we cannot focus on the child that time. Right. So yes, like if something important is there, like मैंने बोला था कि कुछ बातें बच्चे शेयर कर रहा है या फिर कुछ बता रहा है, तो at the time if we are just looking at phone or doing something on phone, तो उनको वो अनअटेंटिव लगेगा. बट यहाँ पे अगर कुछ important है तो yes, you can have a realistic talk with the child, right? There they should understand that my mom will not always be there, will be free for me. Like there will be some time, like if it is something just like you mentioned that he is asking for play with you, right? So Yeah. you can have a talk with them that now the important things are going on, but yes, we have to make sure that you're giving some
टाइम टू द पर्सन, टू द चाइल्ड, दैट नाउ अभी मैं नहीं कर सकती, बट I'll be free by this time and I'll be there with you. So we can play together. So ये जो है ना वो एक भरोसा या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि एश्योरिटी देना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तब जाके बच्चे बहुत मतलब सुनेंगे ही, क्योंकि एश्योरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स की तरफ से जाना। अब नहीं तो वो अवॉइडेंस वाली फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए कि अभी आप बोलोगे मेरा काम है अभी मत आओ, इतना बोलोगे तो बच्चा नहीं समझेगा। बट इफ यू आर गिविंग द एक्चुअल टाइम बाय व्हेन यू विल बी देयर विद द चाइल्ड, so yes, he is going to get the assurity from you, so he will wait for them. Okay, thanks. Thank you so much, ma'am. Any other I will question try from this. other parents? Anyone wants to ask anything? Yes, Ekansh Jamdar, I can see the hand. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनिट. Yes, yes, yes. मॅम मोठ्या Yes, मुलांसाठी मोठ्या मुलांसाठी नंतर आहे ना 12 वाजता सेशन. जी ma'am. Yes, ma'am. हा. We'll be तर starting that by 12:15. Yes. मॅम माझा छोटा मुलगा पण इथेच आहे आणि मोठा पण ह्याच स्कूलमध्ये. तर ते करतो तो ऍक्च्युली होमवर्क वगैरे नाही का, पण जेव्हा तो एकटा करत असतो तेव्हा माझा पण म्हणजे स्वयंपाकाचा वगैरे टाइम असतो. तर मग मी पण मगाशी मॅमने सांगितलं तसं की मी पण त्याला म्हणते की नाही का थांब थोडस, मी माझं हे झाल्यावरती करते म्हणून. मग मी ते बरोबर बोलते का चुकीचं, की त्याला थोडस फिलिंग होतं की मी बोलवतोय मम्मीला आणि ती स्वयंपाकाचं सांगते किंवा किचन मधलं सांगते. तर अशा वेळेस कसं रिॲक्ट करायचं किंवा कसं मुलांना समजून सांगायचं? सो मी म्हटलं तसं हो, आपण ऍज अ पॅरेंट प्रत्येक वेळेला फ्री नाही राहू शकत मुलांसाठी. आपली पण काही टास्क, कामं चालूच असतात. सो जेव्हा संध्याकाळची वेळ असते, मोस्टली मुलांच्या अभ्यासाची वेळ आणि आपल्या स्वयंपाकाची वेळ होत असते. सो या वेळेला ऍज अ पॅरेंट आपल्याला तो टाइम मॅनेजमेंट इथे थोडासा करणं पण गरजेचं आहे. कारण जर मुलांना गरज आहे अभ्यासाच्या वेळेत त्याच्या आईने त्याच्या बरोबर असावं. सो जर काही प्रश्न त्याला असतील तर तो विचारू शकेल. तर इथे मग तुम्ही थोडंसं मी म्हणेल की टाइम मॅनेजमेंट करा, जेणेकरून तुमचा स्वयंपाक एकतर त्याचा अभ्यास सुरू होण्याच्या आधी आटोपून घ्याल किंवा मग त्याचा अभ्यास घेऊन मग नंतर तुम्ही स्वयंपाकाला लागा. नाहीतर प्रॉब्लेम काय होणार इथे की मुलाला ते फिलिंग, आता समजा 1-2दा झालं तर मुलगा समजू शकेल, पण जर रोजच होतंय तर मग ती भावना येणार आहे त्याला की हो माझी आई टाळतीये मला. तर तसं नको व्हायला, राईट. आणि दुसरं एक आहे की टाइम मॅनेजमेंट लागणार आहे इथे. सो त्याच्यातनं हे होईल की मुलाचा अभ्यासही वेळेत होईल आणि तुमचा स्वयंपाकही व्यवस्थित होईल. सो तुम्हालाही ती चिडचिड नाही होणार की सारखा मध्ये येऊन त्रास देतोय. हो, थँक्यू मॅम. तुम्ही खूप छान समजून सांगितलं. म्हणजे जे क्वेश्चन्स होते ना ते तुम्ही जे सांगितलं ना त्यातच म्हणजे कम्प्लीट झाले, क्लिअर झाले डाऊट्स. ओके, थँक्यू. मोठ्या मुलांचं आहे मॅम, पण ते नेक्स्ट सेशनला मी विचार. चालेल. थँक्यू मॅम. Okay, any other question? मॅम मला एक Yes, ma'am. विचारायचं होतं. मुलं आता लहान आहेत, ही आपली 10 वर्षाची वगैरे माझी. तर त्यांना म्हणजे स्वतःहून अभ्यास करावा ह्यासाठीच कसं आपण हे करायचं? कारण स्वतःहून अभ्यासाला कधीच बसत नाहीत ते. मग ते प्रत्येक वेळेस म्हणजे आपण मागं लागण्यापेक्षा अरे नाही माझं हे करायला हवंय मला, ते कसं, त्यासाठी काय करायला हवंय? बरोबर आहे. ओके. सो आय गेस ही जी कंप्लेंट ती बऱ्याच पॅरेंट्स कडनं असते की स्वतःहून कधीच अभ्यासाला बसत नाहीत, नेहमी मागं लागावं लागतं. तर ऍज अ पॅरेंट आपल्याला इथे आहे की कधी-कधी आपण त्यांना अभ्यासामधनं, होमवर्कमधनं ते रिलीज दिलं तरी काही हरकत नसते. पण जर हे नेहमीच होतंय तर ऑब्व्हियसली त्याच्यावर काम करणं गरजेचं आहे. आता इथे आहे की मुलांचा अभ्यास करण्याच्या काही पद्धती आहेत, ज्या आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. स्टडी मेथड्स वी नीड टू थिंक अबाउट फर्स्ट, अँड व्हॉट आर द इंटरेस्ट, लाइक त्यांचे इंटरेस्ट काय आहेत? त्यांच्या कुठल्या पद्धतीने अभ्यास करायला त्यांना, फक्त जर आपण मग रायटिंगवर भर देतोय का फक्त रीडिंगवर भर देतोय? किंवा काही अदर ॲक्टिव्हिटीज पण इन्क्लुडेड आहेत का त्याच्यामध्ये? जेणेकरून मुलांचा इंटरेस्ट टिकून राहील. सो बऱ्याचदा प्रॉब्लेम इथे हाच होतो की
मुलांना एखादी गोष्ट पर्टिक्युलर वेने करायला नाही आवडत. जर होमवर्क हा फक्त रायटिंग रिलेटेड असेल तर बऱ्याच मुलांना तो आवडत नाही. पण तोच होमवर्क करण्यासाठी काही वेगळ्या मेथड्स दिलेल्या असतील किंवा आता आपल्या स्कूलमध्ये सगळ्याच टीचर मोस्टली खूप व्हरायटी ऑफ मेथड्स वापरतात जेणेकरून मुलांना तो होमवर्क बोरिंग नको वाटायला. पण ॲज अ पॅरेंट सुद्धा आपण काही स्ट्रॅटेजीज त्याच्यामध्ये वापरू शकतो, की आपल्या मुलाला काय आवडतं अभ्यास करताना, त्याचं मोटिव्हेशन टिकवण्यासाठी काय-काय कुठल्या पद्धती जसं की रायटिंग नाही आवडत, पण तो अभ्यास होणं महत्वाचं आहे. सो त्याचं ते रायटिंग स्किल इम्प्रूव्ह करायला काय करू शकतो? स्किल म्हणण्यापेक्षा की पण त्याचा इंटरेस्ट कसा डेव्हलप करू शकतो? कारण रायटिंग तर महत्वाची आहे. त्यांना लिहिणं कारण एक्झाम पेपरमध्ये त्यांना लिहिण्याशिवाय पर्याय पण नाही. सो ते मिस आउट नाही करू शकत आपण. सो तिथे मग आपण काय त्यांना स्ट्रॅटेजी देऊ शकतो? त्यांचा तो इंटरेस्ट टिकवण्यासाठी किंवा डेव्हलप करण्यासाठी आपण काय-काय त्याच्यामध्ये आणू शकतो ह्याच्यावर आपल्याला लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. सो इव्हन जर लर्निंग आहे काही पण रीडिंग आवडत नाही मुलांना, तर तिथे आपण सुद्धा पार्टिसिपेट होऊ शकतो का? काही टास्क देऊ शकतो का त्यांना जेणेकरून ते रीडिंग होऊ शकेल? तर याच्यासाठी आपल्याला काम करता येऊ शकतं. Okay, any अ, other question? Here again, I will request parents. Kaustubh, I guess Mr. Fatkatkar. नमस्ते I'm मॅडम. sorry. नमस्ते. Yes, please, ma'am. कौस्तुभ आता 5th स्टँडर्ड मध्ये आहे. तर त्याला राग खूप पटकन येतो आणि राग येतो ह्याचं नाही, पण तो व्यक्त करत नाही राग. ओके. बर. व्यक्त करत नाही. बरं. सो हे त्याचं आधीपासूनच आहे, की आता काही हा बदल तुम्ही फक्त काही मधल्या काळामध्ये तुम्ही बघताय त्याच्यामध्ये? नाही, त्याचा थोडाफार स्वभावच असा आहे लहानपणापासून. तर पण मला असं वाटतं त्यांनी व्यक्त करावं कुठेतरी. बरोबर आहे. तर याच्यामध्ये असं आहे, की प्रत्येक वेळेला आपली मुलं तुमचा मुलगा किती वर्षाचा आहे सांगू शकाल? 5th मध्ये आता तो. 5th मध्ये आहे. बरोबर. ठीक आहे. सो प्रत्येक वेळेला मुलं व्हर्बलीच एक्सप्रेस करतील, गरज नाहीये. जसं मी म्हणाले, की आपण मोठे आहोत त्यामुळे आपल्याला प्रॉपर शब्द वापरून आपला राग, आपल्या भावना व्यक्त करता येतात. मुलांना ते जमतंच असं नाही. जरी त्यांना ती भाषा बोलता येत असली तरी. तर त्याचे जे वेगवेगळे मग याच्यात काय होतं, की मुलं वेगवेगळ्या पर्यायांचा वापर करतात. मग राग व्यक्त करण्यासाठी मे बी कधी-कधी ते काय म्हणू शकतो, की रडणं असेल किंवा खूप असं काहीतरी वस्तू फेकणं असेल, चिड-चिड करणं असेल, ॲक्शन्स किंवा बिहेवियरमध्ये पण त्यांच्या ते दिसू शकतं किंवा काही मुलं व्यक्तच होत नाहीत अजिबातच आणि शांत बसणं प्रिफर करतात. सो तसं जर तुमच्या मुलाचं होत असेल, तर याच्यामध्ये त्याला पॉझिटिव्ह काय म्हणू शकतो, की पॉझिटिव्ह मेथड्स टू एक्सप्रेस द इमोशन्स म्हणजे भावना व्यक्त करण्याच्या काही पॉझिटिव्ह मेथड्स काय आहेत, त्या आपण त्यांना शिकवू शकतो. ओके, तो म्हणजे राग खूप आला की वस्तू वगैरे फेकून देतो किंवा मग बॉक्सिंग बॅगचा यूज करतो किंवा बरोबर. मग खूप सायकलिंग करतो, असं काहीतरी करतो तो. ठीक आहे. सो तो राग व्यक्त होतोय त्याचा, असं नाही की होत नाहीये. पण इथे फक्त आहे की त्या अप्रोप्रिएट मेथड्स काय आहेत, ज्या त्याला पुढे जाऊन एक अडल्ट एक एक चांगला व्यक्ती जेव्हा तो डेव्हलप होणार आहे व्यक्ती म्हणून, तेव्हा त्याला त्या अप्रोप्रिएट पद्धतीने व्यक्त करता आलं पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला काम करता येऊ शकतो. सो याच्यासाठी नक्कीच त्याच्या काही व्हर्बल एक्सप्रेशन मेथड्स आपण त्याला शिकवू शकतो. आणि ओके. त्याचा वापर तो कसा करतोय ते बघून मग त्याच्यातनं आपण ते चेंजेस येतायत की नाही बघू शकतो. ओके. ठीक आहे. थँक यू. सो आय I गेस guess Krishnali Missal's parent are also having some doubt, ma'am. ओके, So ओके. we'll take this question as a last question, and afterwards, if I'll request the parents who are having any question, they can also join the next session by following the same link that we are going to start for the secondary students. So if you will have any question, please do join us in this that session again, and you can ask a question over there. So Krishnali's mother, Mrs. Missal. Yes, ma'am. Please go ahead with your question. Good afternoon, madam. गुड आफ्टरनून.
मॅडम माझा क्वेश्चन असा इमोशनली आहे की माझी मुलगी फर्स्ट स्टँडर्डला आहे आणि मी स्वतः टीचर आहे. मी झेडपी स्कूलमध्ये आहे आणि एक काळाच्या सोबत चालायचं म्हणून मी तिला सीबीएसई स्कूल आपलं जे आळंदीचं आहे ते चॉईस केलं. तर तिचा प्रश्न असा असतो की अगदी देवापुढे दिवा लावल्यानंतर ती डोळे झाकून देवाला म्हणते की देवा मला स्कूलमध्ये इंग्लिश बोलता येऊ दे, किंवा तिला ते आवडते, स्कूल आवडते. पण तिचं जे पहिलं स्कूल होतं किंवा कोरोनामध्ये 2 वर्ष त्यांची मुलांची गेली, तर त्यामध्ये तिचं फक्त नर्सरीच झालं. मग तिला ती इंग्लिश बद्दल खूप म्हणजे असं ती बाऊ करून घेते की काय असं मला कुठेतरी वाटतं. पण एक इमोशनल फिलिंग मला तिला असं कायम सांगायचं असतं की तू हे करू शकतेस, तू तिथपर्यंत पोहोचणार आहेस. परंतु तिचं काय होतंय की म्हणजे तिला ते मुलांसमोर म्हणजे इरिटेट होती ती, किंवा तिच्या टीचरही म्हणतात ती खूप छान करते. मला पण जाणवते की ती हे करू शकते. पण मला तिला ती फिलिंग द्यायची की तू हे करू शकतेस, किंवा तिला मला सांगायचंय की तू परफेक्ट होऊ शकतेस. आता लहान मुलं आहेत, शेवटी सीबीएसईचा जो आपलं घराचं बॅकग्राऊंड सुद्धा मराठी असतं, त्यांना त्या प्रॉब्लेमला फेस करायचंच असतं. पुढे जाऊन ते करणार आहेत, आपल्याला हे कळतंय. पण मला कुठेतरी असं वाटतं की तिची घुसमट होती का, किंवा मग आम्ही कुठे कमी, कारण ती सकाळी 7ला स्कूलमध्ये जाते, दोघे आम्ही जॉबला असल्यामुळे तिला वेळ देऊ शकत नाही. मग संध्याकाळी ती आम्हाला 6-6:30ला भेटते. मग तेव्हा तिचा खेळण्याचा मूड असतो, किंवा तिचं कॅपॅसिटीच राहिलेली नसते तिच्यामध्ये. मग अभ्यास कधी घ्यायचा, संडेला जर असेल तर त्यांच्या अपेक्षा असतात मुलांच्या की आम्हाला थोडंसं वेळ खेळण्यासाठी किंवा असं मिळावं. मग आम्ही जर तिच्यावरती फोकस करायचं म्हटलं तर तेही होऊ शकत नाही. मग तिला कशा पद्धतीने ट्रीट करावं की तिला ती फिलिंग जाणवेल की मला हे येऊ शकतं, मी हे करू शकते. अगदी तिचं हँडरायटिंग छान चाललंय, पण तिला कुठेतरी वाटते की मी कुठेतरी कमी पडते, किंवा क्लासमध्ये मला हे म्हणजे जमत नाही. आणि मग ती ना असं तिच्या बहिणीशी शेअर करते, किंवा त्या दिवशी अगदी देवापुढे हात जोडून पण ती म्हणत होती की देवा माझं स्कूल खूप चांगलं आहे, पण मला कधी असं म्हणजे तिला काय म्हणायचं ते मला कळत नव्हतं, पण मला चांगलं येऊ दे, माझं चांगलं होऊ दे असं. मी तिला ओके. कोणत्या ग्रेड मध्ये आहे तुमची मुलगी? तुमचा आवाज येत नाही ना. हा मॅडम, फर्स्ट मध्ये आहे. फर्स्ट मध्ये आहे, ओके. सो तिला असं वाटतंय की इंग्लिश तिला कमी जमतंय कम्पॅरेटिव्ह बाकीचे स्टुडंट, असं तिचं मत आहे का? बरं, ओके ओके, ठीक आहे. आणि ती कसं असतं की मुलांचं असतं असं आहे की आपण इतरांमध्ये जातोय तर आपल्याला पण तेवढं जमलंच पाहिजे. सो अशा अपेक्षा मुलं स्वतःच्या स्वतः करतात. म्हणजे पॅरेंट्सच्या असतात ते वेगळ्याच, पण मुलांच्या पण आहेत. सो इथे एक गोष्ट आहे की तुमच्या मुलीला ते कळतंय की तिला इंग्लिशवर काम करायचंय. म्हणजे एवढ्या कमी वयामध्ये तो ते एक म्हणतो ना की ते एक रिअलायझेशन झाल्यासारखं आहे की तिला आपल्या इंग्लिशमध्ये इम्प्रुव्हमेंट आणायची आहे, कारण आपण एक छान शाळेमध्ये शिकतो आहोत. सो इथे मग तिच्यासाठी थोडंसं आणि घरचं बॅकग्राऊंड तुम्ही म्हणालात तसं नक्कीच आहे की प्रत्येक म्हणजे शाळेमध्ये जर मुलं इंग्लिशमध्ये बोलतायत तर ते घरी पण सेम तशाच ह्याच्यामध्ये त्यांचं कम्युनिकेशन होतंय त्याच लँग्वेजमध्ये नक्कीच होत नाही. सो तो फरक तिथे आहे. सो ॲज अ पॅरेंट मी तुम्हाला इथे रिक्वेस्ट करेल की जितकं जमेल तितकं घरी पण इंग्लिशमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करा तिच्याबरोबर. कारण ती तुमच्याकडेच कारण ती आत्ता फक्त फर्स्ट ग्रेडमध्येच ती तुमच्याकडेच बघतीये ॲज अ पॅरेंट. तुम्ही तिला ह्याच्यातनं मदत करणार आहात, किंवा दुसरं एक आहे की माझे पॅरेंट मला ह्याच्यामध्ये आता तिची सगळ्यात मोठी अडचण तीच आहे. सो माझ्या अडचणीत माझे आई-वडील माझ्या बरोबर आहेत आणि ते सुद्धा याच्यामध्ये मला सपोर्ट करतायत. सो थोडंसं मी अगदीच म्हणणार नाही की तुम्हालाही सगळंच इंग्लिश की पूर्ण कम्युनिकेशन तुमचं त्यातच हवं. पण जितकं जे काही तुम्ही बोलाल बेसिक लेव्हलचा प्रयत्न करा की तिच्याबरोबर होतंय. आणि दुसरं एक आहे की मी तुमच्या मुलीला भेटेन स्कूलमध्ये पण, टीचरशी पण बोलेल. तर बघूयात म्हणजे इथे तिला आपण काय तिचा हा जो प्रश्न आहे त्याच्यावर काय आपण लाईक काम करू शकतो स्कूल किंवा खूप आवडलंय, हां. कम्फर्टेबल का वाटत नाहीये, किंवा ती असं म्हणते की मला हे येतच नाहीये, मला हे येतच नाहीये. आता याच्यात हे पण आहे की तिचा कॉन्फिडन्स इथे तो मेंटेन ठेवणं किंवा डेव्हलप करणं पण गरजेचं आहे. इथे फक्त इंग्लिशचाच प्रश्न नाहीये दिसत आहे. तर त्याच्यासाठी सुद्धा बघूयात. मी तिला पर्सनली तिकडे भेटेन आणि टीचरशी पण एकदा बोलून घेईन. थँक यू मॅडम. Yes. So Shikha ma'am, I guess we are done with the question. So we yes, ma'am. And again,
I'll be requesting parents, if they are having any doubts, they can join our next session as well. And I'll like to thank each one of the parent present here for joining the session, and hopefully they all have liked it. I'll request each one of you to share your feedbacks to the class teachers of your child. आप एक मैसेज टाइप करके या आपका जो भी फीडबैक है अबाउट दिस सेशन प्लीज डू शेयर विद द क्लास टीचर and we'll be very happy to get your valuable feedbacks. And yes, parenting is something like whatever Dipali ma'am has said, that now also like as I said that I am also parent of 2 kids, and that too a working parent, that is very difficult to handle. But now there are something जो हम usually avoid कर देते हैं अपने work pressure में या अपनी daily life में. So I'll definitely start working on that thing. And thank you so much to all the parents and Dipali ma'am for sharing your valuable thoughts and your strategies and the techniques that we need to apply for being a good parent and for understanding our kids' emotion and their values. So hopefully everyone has liked that, and please do share your feedbacks with us. And still, again, I'll repeat, if you will have any doubt and you want to interact with Dipali ma'am, please do join our next session that we are going to start within 5 to 10 minutes, Dipali ma'am. Yes. Okay. So thank you once again to all the parents who have like joined the session on the Sunday morning, and maybe hopefully we'll meet in the school as well.